अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है दी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली living organisms adapt their moves and positions in response to the environmental changes for their protection or to their advantage. When it reacts to the changes in its surrounding, it is referred to as stimulus, while the reaction to the stimulus is referred to as a response. Like nervous system basically हमारे हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से बचाने के लिए, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से बचाने के लिए और हमारे प्रोटेक्शन करने के लिए स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक रिस्पॉन्स होता है और उसको जो स्टिमुलाई रिस्पॉन्स बोला जाता है। कॉमन स्टिमुलाई आर साउंड है, लाइट है, एयर है, हीट है, स्मेल है, टेस्ट है, वाटर एंड ग्रेविटी है। Think of burning your finger or cracking your bone without any pain sensation. It may certainly sound like a superpower or an ideal situation. However, when it comes to the standpoint of survival, it can be distorted. कि लाइक हमें जो है वो जब कोई पेन वगैरह होता है या कोई जलन या कोई सर्जरी वगैरह कुछ भी, तो हमें जो है वो रिस्पॉन्स शो होता है। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम जो ओवरऑल रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है। ठीक है, the characteristic behavior of living entities is to respond to stimuli while the intervention of with the intervention of the nervous system. It is an organ system ascribed to send signals from the spinal cord and the brain throughout the body and then back from all the body parts to the brain. The neuron acts as the mediator and is the basic signaling unit of the nervous system. Neuron जो है वो basic unit है हमारे nervous system का। Pain is the body way of letting us know that something is not right. Of course, sign and symptoms में मैंने जैसे बात की थी कि साइन क्या होते हैं, बेसिकली वो जो डॉक्टर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, सिम्टम्स वो होते हैं जो हम खुद डॉक्टर को बता रहे होते हैं। ठीक है, तो it can prevent further injuries or push us to seek medical attention. Of course, moreover, all of this is possible because humans can respond and treat to stimuli due to control and coordination among the various organs and organ systems. उसके बाद हम मजीद बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स takes so only the nervous system which coordinates activities of our body. It is the control system for all our actions, thinking and behavior. नर्वस सिस्टम जो है ओवरऑल हमारे बॉडी के तमाम तर एक्शंस को, बिहेवियर्स को, पर्सनैलिटी को, सबको कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम बेसिकली है क्या, इसकी हम बात देखते हैं करते हैं कि वो सिर्फ हमने जो है सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम बेसिकली है क्या। The nervous system or the neural system is a complex network of neurons. Complex network होता है neurons का, specialized to carry messages. The complexity of the nervous system increases as we move towards higher animals. For instance, Canadians such as jellyfish have relatively simple nerve nets spread throughout the body. Crabs have a more complicated nervous system in the form of two nerve centers called dorsal ganglion and ventral ganglion. As we move further up the ladder, higher organisms such as vertebrates have a developed brain. Like हमारी बात की जा रही है more developed organism की। Moreover, it is one of the most complicated structures in the animal kingdom, containing billions of neurons are intricately connected. In the human body, the neural system integrates the activities of organs based on the stimuli which the neurons detect and transmit. They transmit messages in the form of electrical impulses and convey messages to and from the sense organs. Thus, the nervous coordination involves the participation of the sense organ, nerve, spinal cord and brain. उसके बाद हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड, मीडियन नर्व, thoracic nerve, radial nerve, sacral nerve, sciatic nerve, tibial nerve. ये डायग्राम ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है, इनको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। One of the most complex organ system to ever involve the human nervous system consists of two parts. जैसा कि central nervous system brain और spinal cord पर मुश्तमिल है, consists of the brain and spinal cord. Peripheral nervous system includes all the nerves of the body. तमाम तरह के nerves हमारी बॉडी में मौजूद है। Central nervous system की हम सबसे पहले बात करते हैं। The central nervous system CNS के नाम से जो जाना जाता है is often
called the central processing unit of the body. Central processing unit है हमारी body का. It consists of the brain and the spinal cord. The brain is one of the important largest center of the human nervous system, हमारा brain. It is the control unit of the nervous system which helps us in discovering new things, remembering and understanding, making decisions, and a lot more. It is enclosed within the skull, which provides frontal, lateral, and dorsal protection. The human brain is composed of three major parts. Human brain में सबसे पहले फोर्थ ब्रेन की बात करेंगे, फिर मिड ब्रेन की बात करेंगे, फिर हाइंड ब्रेन की बात करेंगे, हिंड ब्रेन की. Forebrain, anterior part of the brain consists of cerebrum, hypothalamus and thalamus. तीन तरह के जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्रेन में, फोर्थ ब्रेन में. The anterior part of the brain consists of cerebrum, hypothalamus and thalamus. उसके बाद हम मिड ब्रेन की अगर बात करें तो the smaller and central part of the brain stem consists of tectum and tegmentum. मिड ब्रेन में. हिंड ब्रेन, the central region of the brain composed of cerebellum, medulla and pons. स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो इसमें द स्पाइनल कॉर्ड इज द cylindrical bundle of nerve fibers and associated tissues enclosed within the spine and connects all parts of the body to the brain. It begins in continuation with the medulla से continue कर and extend downwards. It is enclosed in a bony cage called vertebral column and surrounded by membranes called meninges. बोला गया. The spinal cord is concerned with spinal reflex actions and the conduction of nerve impulses to and from the brain. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखेंगे हम लोग क्या है बेसिकली. नर्व हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की थी, अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस के नाम से जाना जाता है. इज द लेटरल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट डेवलप्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट डेवलप बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कार्य which connects different parts of the body with the CNS. We carry out both voluntary and involuntary actions with the help of peripheral nerves. PNS includes two types of nerve fibers, efficient nerve fibers और efficient nerve fibers में सबसे पहले A से और E से. A से जो है these are responsible for transmitting messages from tissues and organs to the CNS. Transmitting messages हो रही है tissues और organs से CNS की तरफ. उसके बाद second E से जो है these are responsible for conveying messages from CNS to the corresponding peripheral organ के दौरान. क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. क्लासिफिकेशन की अब हम बात करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एसएनएस के नाम से. इट इज द न्यूरल सिस्टम दैट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शंस. हमारे बॉडी में जो भी वॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं उनको सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल कर रहा है in the body by transmitting impulses from CNS to skeletal muscle cells. It consists of the somatic nerves. Autonomic neural system, ENS के नाम से. The autonomic neural system is involved in involuntary actions like regulation of psychological functions जैसे digestion है, respiration है, salivation है, इन सब चीजों को जो autonomic auto पे. It is a self-regulating system which conveys the impulses from the CNS to the smooth muscle and involuntary organs में. Involuntary organs हमारे पास heart है, bladder है, liver है, lungs हैं, बहुत सारे. The autonomic neural system can be divided into sympathetic nervous system और parasympathetic nervous system. Autonomic की हम अगर बात करें तो अब हम लोग ये न्यूरॉन की डायग्राम दिखाई गई है. न्यूरॉन बेसिकली क्या है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. न्यूरॉन, नर्व, फाइबर के बारे में पढ़ते हैं. A neuron is a structured and functional unit of the nervous system. न्यूरॉन्स से एक नेटवर्क सी होता है न्यूरॉन्स का जो कि नर्वस सिस्टम को डेवलप कर रहा होता है. A neuron is a structured and functional unit of the nervous system, and unlike other cells, neurons are irregular in shape and able to conduct electrochemical signals. The different parts of a neuron are discussed below. Dendrite stretches out from the cell body of a neuron, and it is the shortest fiber in the cell body. Axon is the longest thread on the cell body of a neuron and has an insulating and protecting sheet of myelin around it. Cell body consists of cytoplasm and nucleus. Synapse is the microscopic gap between a pair of adjacent neurons over which nerve impulses pass when moving from one neuron to the other. उसके बाद हम nerves की बात करेंगे. Nerves क्या है basically? Nerves की हम बात कर लेते हैं. Nerves are thread-like structures that emerge from the brain and spinal cord. Nerves जो है वो हमारे brain और spinal cord से emerge हो रही है. It is responsible for carrying messages to all the parts of the body. There are three types of nerves:
Some of these neurons can fire signals at speed of over 119 m/s, above 428 km/h के हिसाब से, इतनी like fast. Sensory nerves send messages from all the senses to the brain. Motor nerves carry messages from the brain to all muscles. Mixed nerves सेंसरी भी उठा रही है और मोटर नर्व्स को भी मैसेजेस पहुंचा रही है. अब क्रेनियल नर्व बेसिकली क्या होती है, इनको हम लोग देख लेते हैं. क्रेनियल नर्व्स begin from the brain, brain से emerge हो रही है. As these nerves carry impulses to start from the central nervous system. Central cranial nerves belong to the groups of mixed nerves, while certain ones fall under sensory nerves. Spinal nerves originate from the spinal cord. All the spinal nerves carry impulses to and from the central nervous system, and these are part of mixed nerves. The above nervous system diagram the various nerves arising from various parts of the body. स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं बेसिकली कि सेरिब्रम जो है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है और क्या क्या है इसका. सेरिब्रम, the cerebrum is the largest part of the brain. हमारे brain का जो largest part है वो cerebrum है, located superiorly and inferiorly in relation to the brainstem. It consists of two cerebral hemispheres, left or right, separated by the flex cerebri of the dura mater. Embryonically, the cerebrum is derived from the prosencephalon. Anatomical position और structure की हम थोड़ी सी बात करते हैं. Cerebrum, ठीक है. The cerebrum is located within the bony cranium में located. Location बताई जा रही है. It extends from the frontal bone, frontal anteriorly, to the occipital bone posteriorly. Within the skull, the cerebrum fills the anterior and middle cranial fossa and is located above the tantrum cerebelli inferior posteriorly. Internal structure, the cerebrum is comprised of two different types of tissues, gray matter and white matter. इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है सेरिब्रम की. ग्रे मैटर बेसिकली क्या है, फॉर्म्स द सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर नोन एज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग एंड कोऑर्डिनेशन. प्रोसेसिंग जितनी भी हमारी बॉडी में हो रही है, कोऑर्डिनेशन वो ग्रे मैटर करवा रहा है सेरिब्रम का. उसके बाद व्हाइट मैटर फॉर्म्स द बल्क ऑफ द डीपर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. It consists of glial cells and myelinated axons that connect the various gray matter areas. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में एक्सटर्नली द सेरिब्रम किस तरह से है, एज अ हाईली कन्वोलेटेड अपीयरेंस कंसिस्टिंग ऑफ फुल साइज ग्रूव्स और डिप्रेशंस एंड रिजेस और एलिवेशंस होती हैं, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू एनाटॉमिकली symmetrical hemispheres by the longitudinal fissure. A major sulcus that runs in the median sagittal plane, the flex cerebri of the dura mater, descends vertically to fill this feature. The two cerebrospheres are connected by a white matter structure. इनको बोला जाता है corpus callosum. The main sulci are, इसमें हम देखते हैं central sulcus में grooves separating the frontal and parental lobes, lateral में grooves separating the frontal and parental lobes from the temporal lobes से separate किए जा रहे हैं. Lunate sulcus grooves located in the occipital cortex. The main gray eye are pre-central girls or post-central. Pre से reach directly anterior to central sulcus, located on location of primary motor cortex. Post-central reach directly posterior to central sulcus, location of primary somatosensory cortex. Superior में temporal grids located inferior to lateral sulcus, responsible for the reception and processing of sound. Okay. तो ये हमें ब्रेन. अब हम सेरिब्रम की हमने बात की, अब हम मिड ब्रेन की बात करेंगे. The midbrain, also known as the like a medical term, is the most superior of the three regions of the brainstem. It acts as a conduit between the forebrain above and the pons and cerebellum below. Midbrain, pons, or medulla, the three parts of major parts of the brainstem. External anatomy of the midbrain. External anatomy की अगर हम बात करें, the midbrain is the smallest of the three regions of the brainstem, measuring around 2 cm in length. As it ascends, the midbrain travels through the opening in the tantrum cerebelli. It can be divided into two parts. Tectum located posteriorly to the cerebral aqueduct, paired cerebral pendules located anteriorly and laterally. Internally, the cerebral pendules are further separated by the substantia nigeria into the crus anterior and the tegmentum posteriorly. ठीक है, ये जरूरी नहीं है, खास नहीं है, ज्यादा इसे हम रिवाइज करें इन शॉर्ट.
टेक्टम जो है, द टेक्टम houses four rounded promises called pulpuli, collectively the corporate which sit directly inferiorly to the pineal gland. The pulpuli are separated by the cruciform sulcus. There are two superior and two inferior pulpuli extending laterally from each pulpuli are the quadrigemal brachium. Superior में हम देखेंगे forms a pathway between the superior and the retina of the eye. Inferior में basically lateral side पे होगा, ठीक है। उसके बाद inferiorly to the pupilla, the pupillary nerve CNIV emerges before sweeping across the anterior surface. It's not important. Cerebellar pendulias क्या है? Basically the paired cerebral pendulias extend from the cerebral hemisphere to converge as they meet the bones. They are separated anteriorly in the midline by the interpendicular fossa, the floor of which is termed as the posterior perforated surface. It's not that. Okay. उसके C and triple I is seen exciting from between the pendulas while the optic tract runs around the superior border of the midbrain. It's not important. रहने दीजिएगा। Internal anatomy हम brain की थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, external को लाइक ठीक है ओके। Two transverse sections of the midbrain will discuss the level of the inferior pupilla and the level of the superior pupilla. Level of the inferior basically क्या है? Anterolateral surface of the midbrain houses the paired cerebri, four fiber tracts run within the crus. उसके बाद फ्रंट ये लाइक बताई जा रही है, लाइक डिवीजन बताई जा रही है, फ्रंटो कोर्टिको कोर्टिको टेम्पोरो बेसिकली लोकेटेड कहाँ पे लोकेशन, ठीक है। इसको देखने की जरूरत नहीं है, ओके है ये। अच्छा मेडुला ओब्लुगेटा की हम अगर बात करें ब्रेन के थर्ड पार्ट की, तो योर मेडुला ओब्लुगेटा इज द बॉटम पार्ट, bottom most part of your brain. Its location means it's where your brain and spinal cord connect, जहाँ से brain और spinal cord connect हो रहे हैं, making it a key conduit for nerve signal to and from your body. It also helps vital processing like your heartbeat को, breathing को, and blood pressure को medulla oblongata brain का control कर रहा होता है। What is the medulla oblongata? Your medulla oblongata is a part of your brain stem, of course, जहाँ से brain और spinal cord connect हो रहा है, which connects your brain to your spinal cord. That makes your medulla a major connection point in your nervous system. It also manages many of the most important functions of our body. ठीक है। What does the medulla oblongata do? Basically manages heart circulation, breathing, manages your autonomic processes को, nerve connections को, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्रॉसओवर पॉइंट द मेडुला एंड क्रेनियल नर्व्स में CNX क्या है, CNI9 क्या है, ठीक है। It's not. What is the medulla? Medulla क्या है? Medulla oblongata देखते हैं। Medulla is the bottommost part of your brain, connected to your spinal cord through the forearm magnet and opening at the bottom of your skull. Just above your medulla is your pons, which is just below the central structures in your brain, of course. ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो खुद ब खुद लाइक जो है हमारे प्रोसेसिंग हो रही होती है, जैसे हमारे किडनीज वर्क कर रही है, हमारा हार्ट, स्वेट है, सैलिवरी ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इनबिल्ट फॉल आउट करें, इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। फंक्शंस ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमने देखा है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, हार्ट एंड ब्रीथिंग रेट्स को, बॉडी टेम्परेचर को, डाइजेशन को, हमारे मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, यूरिनेशन को, सेक्सुअल रिस्पॉन्स को, डेफिकेशन को, फीसिस को ऑलरेडी। अच्छा अब हम ये पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। इसमें आपने इतना ही तैयार करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है सिंपैथेटिक इनर्वेशन में, जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इसमें आता है, जो कि कंट्रोल खुद ब खुद नहीं हो रहा था, हम कंट्रोल कर रहे थे, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा था। फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है हमारे पास, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे स्पाइनल कॉर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेरिबेलम भी ऑलरेडी, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ये रिवीजन है आपकी, ठीक है। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड डिवीजन भी हम देख चुके हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर किसके क्या है, ठीक है। ये जो था हमारा नर्वस सिस्टम था, इसको शॉर्ट्स आपने देखना है, बेसिकली है क्या, मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं नर्वस सिस्टम के, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन क्या कर रहा है, ठीक है। इन सब चीजों को जो है आपने क्लैरिफाई करना है, सिंपल। सिंपैथेटिक नर्वस और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के आपको डेफिनेशंस को और उनके प्रॉपर फंक्शंस का पता हो, सिंपल, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में या इंटरनल एक्सटर्नल एरिया में ज्यादा नहीं करना। ओके हो गया। तो ये आज का हमारा 17th लेक्चर, तो वो कंप्लीट हुआ था, हमने नर्वस सिस्टम की बात की थी, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह 18 लेक्चर में नेक्स्ट बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।